and I hope you're all doing really good. We have come up with another video on birthday glow up routine. So basically I have my birthday in this week and so I thought to share my quick glow up routine with all of you because I really do not have time to go to the parlor and get the services done. So I thought घर पे ही कर लेती हूँ. एंड मेरा आवाज़ इतना ठीक नहीं होगा बिकॉज सिंस 4-5 days बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मैं. एंड फाइनली टुडे आई हैड दैट एनर्जी टू मेक अ वीडियो सो आई थॉट लेट्स शूट इट फटाक से एंड अपलोड इट. ऑल राइट, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ अभी तो करो यार. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. ऑल राइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो. वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज चेंज आवर टी-शर्ट ताकि वो ख़राब ना हो और उसके बाद में पुट अ हेयर बेल्ट और समथिंग ताकि बाल बीच बीच में ना आए. सो आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर एंड देन स्टार्ट विद द प्रोसेस. और एक बात है, बर्थडेज आप बहुत बड़े सेलिब्रेट करो या ना करो बट मेक श्योर यू लुक स्पेशल एंड यू ट्रीट योर सेल्फ ऑन दिस डे because it is indeed your special day and you really need to enjoy it. Make sure you focus on your self-care, अच्छे clothes लो, do some good makeup, good skincare routines and just enjoy that day. So the very first thing that we are going to do is face wash ताकि जो भी dirt है face पे वो पहले clean हो जाए. This is the face wash that I am using since a lot of days. मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग ऑल द प्रोसीजर आप अपना फेस बहुत अच्छे से धो लें ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएगी और उसके बाद में हम लोग एक क्लीन फेस पे बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश सिंस लास्ट 15-20 days एंड आई थॉट टू मेक अ रिव्यू. तो अगले वीक मैं इसका रिव्यू वीडियो डालूंगी which is vitamin C face wash along with vitamin C serum. Make sure you check out the video. It's from Wow Skin Science. Tell you how it's working on my skin so that you will have an idea about it. So I've washed my face now. So now while I've washed my face properly, I'll be using a charcoal peel off mask, activated charcoal peel off mask which is from La Organo. So let me tell you something. La Organo is a skincare and hair care brand. They have got a lot of products related to skin and hair care. So this consists of vitamin C and tea tree oil, which is really good for your skin, which helps to clear your skin, gives a smooth and glowing texture. और peel off mask आपके फेस पे पोल्यूशन की वजह से जो भी डर्ट और इम्प्योरिटीज है वो सब निकालने में हेल्प करते हैं. Deeply unclogs the pores and helps to detoxify your skin. Take some amount on this brush and apply it properly. यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नोज़ पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स होता है. मुझे ब्लैक हेड्स उतने नहीं होते बट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वाइट हेड्स ऑन नोज़ एंड ओवर ईयर ऑन चिन एरिया. सो आई विल पुट मोर ओवर देयर और एक फोरहेड पे थोड़े होते हैं. सो या आई विल पुट अ गुड क्वांटिटी. मेक श्योर यू अवॉइड पुटिंग इट ऑन योर लिप्स, आईज और आईब्रोज. So yes, we have put up the mask. अब 20 minutes तक उसे रखना है. Let me tell you one thing. I don't know if it's weird or not. मुझे ना पील ऑफ मास्क जो होता है ना वो निकालने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है. जस्ट लाइक बचपन में मैं सेम फेविकॉल के साथ करती थी. आई यूज्ड टू पुट दैट ऑन माई हैंड एंड आई यूज्ड टू रिमूव दैट एंड इट वाज सो सेटिस्फाइंग. एंड सेम है मेरा पील ऑफ मास्क के साथ में. आप में से किसी को तो होगा ही पक्का ये आदत. It feels really interesting. Let's wait for 20 minutes and get back again. मेरे काफ़ी सारे वाइट हेयर्स इसमें पुल ऑफ होके आ रहे हैं. पील ऑफ मास्क निकाल दिया है एंड यू कैन सी द स्किन लुक्स रियली बेटर, quite good than before. Skin काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है आफ्टर पीलिंग इट ऑफ. And you can also notice that it's clearly visible. I think it looks pretty good than before. और यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा tan skin होता है, so ये भी काफ़ी हद तक कम लग रहा है मुझे.
So yeah, I think it is a really good peel off mask and you can also give it a try. My skin काफी clear और clean हो गई है. This thing is a face pack, so I'll be putting a face pack now and I'll keep it for 15 to 20 minutes. The skin काफी glowing और refreshing लगेगी. So yeah, let's start now. This is a face pack which consists of oatmeal and honey. So basically oatmeal is really good for the nourishment of the skin. Skin को काफी अच्छी तरह से exfoliate करता है and also helps in unclogging the pores. And the second thing is honey. Honey is really good for your skin, of the dead skin cells in your skin. कि skin पे अगर dark spots भी होते हैं तो उस चीज़ के लिए भी honey is really good. Dark spots को lighten करने के लिए help करता है. And make sure you avoid it from eyes, lips and eyebrows. I want to tell you one thing. Keep pampering yourself this way because there is no one who can pamper you most in this world than yourself. हो सकता है कोई और भी बहुत ज़्यादा pamper करता हो, but that at times is temporary. Who are your permanent partners? खुश रहो, खुद को खुश रखो, खुद को pamper करते रहो. इससे क्या होगा पता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन कब आ रहा है pamper कर रहा है, कौन जा रहा है लाइफ से. And you will always be there for yourself. So I have washed my face now and you can see what a glow it has given. Wow. अच्छी लग रही है स्किन, काफ़ी अच्छा टेक्सचर हुआ है, टैन कम हुआ है फेस का. So yeah, it has worked amazing. Really feel very good right now. That's the 2-3 basic steps that we have done. The next is applying a moisturizer. So for moisturizing, we are using this gel based moisturizer from Pond's Super Light Gel based moisturizer which consists of hyaluronic acid and vitamin E. और मुझे ये moisturizer में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि it's not oily and it's gel based. I'll just show you the texture. Can you see? So yeah, I've been using this moisturizer since 2 months. 2 महीने हो गए. Continuously I'm using this. The fragrance of it is really good. And the skin is looking pretty healthy now. You can see that. So this is the most natural skin of mine without any makeup and it's all just the skincare that we have done and it's looking super healthy right now. It looks really good I think. The skincare part is done already and now it's the time for hair care. तो मैंने बाल सुबह already धो लिए हैं and after that we have done all this. Now what I'm going to do is apply a hair mask. So yeah, we'll be applying a hair mask now. As you all know, my hair is very frizzy and to manage the frizz and the brittleness, I have to put a hair mask. I'm using this Rice Keratin hair mask and it's quite good and helps me a lot. It consists of rice water and rice keratin protein and lavender essential oil. As we all know, keratin is really important for our hair and अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा weak है मेरी तरह, then this would definitely help. The protein which really makes your hair stronger. So yeah, if your hair is weak and dry and damaged, then in that case you can also try using this hair mask. Massage it on my scalp gently and then wash it off. I'll let it set for 10 to 15 minutes and in the meantime बाकी चीज़ें कर लेती हूँ. Like I'm thinking of waxing my hands and legs, जो मैं बहुत usually नहीं करती हूँ. Only in terms of any occasions or anything I do that. So yeah, I'm thinking to do that now and after that we'll wash our hair. And yeah, let's see if this glow up routine helps me or not. If it helps, I definitely would suggest you to try that out. I'll get back after washing my hair. This is how my hair looks now. और एक चीज़ रह गई है which is applying a nail pen. बालों को dry होने देते हैं. And in the meantime, I'll be applying a nail pen. So I'll apply this one for my birthday. I think it should look good. So
So this is about the skincare and hair care. Now next part is the outfit. तो अगला वीडियो होगा outfits related, but I'm not sure outfits मेरे आएंगे या नहीं birthday तक. And if it does come, I'll be uploading another vlog in 2 to 3 days. So I just hope it comes. And then I've planned of one more vlog, which is the actual birthday vlog. So I have crossed my fingers कि सब according to the plans हो जाए, and I would be able to make more and more videos for you and try to make it fun as much as possible. So I hope you loved this video, and if you did, do not forget to like, share and subscribe. Also follow my page on Instagram. Bell icon को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको notifications मिल जाएंगे whenever I'm uploading any new video. Of love, bye.